Hello, welcome to my YouTube channel. Today in this video I am going to make the second program for the practical file of class 12th Informatics practices. Now before proceeding I would like to tell you that these are not the programs that you have to submit in your practical file for board exam. On similar pattern you can develop other programs also. So this is not just the solution to your practical file. These are the guidelines how you will write the program for your practical files. Now in this video we'll be drawing in program number 1 you have drawn single line chart. सिंगल लाइन आपने बनाया था. इस वीडियो में आप मल्टीपल लाइन ड्रॉ करने जा रहे हैं. हाउ टू ड्रॉ द मल्टीपल लाइन एंड व्हाट इज द प्रॉब्लम, लेट अस सी. Now problem is there is a table given below. You can see for each zone north, south, east, west for 12 months rainfall has been given in millimeters. Out of these values you have to draw line chart for north, south, east, west and central on the same figure. That means for north zone you have to draw one line chart. For south zone you have to draw another line chart. In that way you have to draw 5 line charts in the same figure depicting the rainfall from January to December. So let us see the code. For saving the time I have written the code in IDLE and copied and pasted in the PowerPoint slide, so we can just view and understand the code. See, first of all, we have imported matplotlib.pyplot as PLT. This is the library. Matplotlib.pyplot is the library in which there are various methods to be called for drawing the line chart, bar chart, histogram, etc. etc. So here plot method is residing in matplotlib.pyplot. That is why it has to be called. And there are various other methods also, like X label, Y label, title, grid, legend and show. All these methods are in this library. So first of all, we are making a list of 12 months, January to December. And this will be represented on X-axis. On Y-axis, we'll be representing Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, 5 lists to depict the rainfall in millimeter for representing it on y-axis. तो इस तरह से आपकी 5 डाटा हैं, 5 सीरीज हैं या 5 लिस्ट हैं, आप कह सकते हैं. ये पांचों लिस्ट से 5 लाइन चार्ट बनने वाला है. plt.plot, let us draw the first line chart. plt.plot label comma y1. label means x axis पर क्या दिखाएंगे comma y axis पर क्या दिखाएंगे. y axis पर I am showing rainfall of north zone. x axis पर मैं शो कर रहा हूं months के नाम, that is stored in label. Then line style, line का स्टाइल क्या होगा जो ड्रॉ होगी, that is dashed, dash dash से बनी हुई लाइन होगी. लेबल, जब आपका लेजेंड शो होगा तो उस लेजेंड में किस कलर की कौन सी लाइन क्या डिपिक्ट कर रही है, वो लेबल में मैंने नॉर्थ जोन डाला है तो ये वाला जो लाइन ग्राफ है सपोज ये रेड कलर में आता है तो नॉर्थ जोन रेड कलर में लेजेंड में शो करेगा. मार्कर, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, यानी जनवरी का 14, जनवरी 14, इस तरह से जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा that is going to show you, I mean square, marker S for square, and its edge color will be red. Similarly all 5 lines detail have been written. plt.plot में सभी पांचों लाइनों का डिटेल बिल्कुल सिमिलरली आपने लिखा हुआ है, एक्सेप्ट y एक्सिस का डेटा बदल रहा है. यहाँ पर y1, यहाँ y2, y3, y4, y5 एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर कॉमन. यहाँ पर मार्कर का शेप कहीं चेंज कर दिया है, मार्कर कैरेट साइन आपने डाला, दैट मींस इट विल फॉर्म ट्रायंगल. एस फॉर स्क्वायर. कलर्स आपको पता होने चाहिए, आर फॉर रेड, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन एंड ऑल. सो दैट वे वी हैव ड्रॉन 5 लाइन्स in the same figure.
एक्स एक्सिस पर आप लेबल डाल रहे हैं मंथ, बिकॉज एक्स एक्सिस is showing the months and its font size is 10, color is red. Y एक्सिस का लेबल जो है रेनफॉल इन मिलीमीटर, फॉन्ट साइज 10, कलर इज रेड। ग्राफ का टाइटल है आपका जोन वाइज रेनफॉल एनालिसिस इन ब्लू कलर। Then we are showing the grid also. At the background of the plot area of chart you will be having horizontal and vertical lines का एक ग्राफ टाइप ग्रिड लाइंस डिस्प्ले होंगी बैकग्राउंड में। plt डॉट legend टू शो द लेजेंड कि कौन से कलर की लाइन किस जोन को डिपिक्ट करती है। So it will be shown through plt.legend, legend box show करेगा। Then this is the line which must be written after all these coding. At the end we should write plt.show. Until and unless we write this line, call this method show method, our graph, our figure is not going to be displayed. So that's all about this coding. Let us see the output, how the graph is being displayed. See, this is the graph. यहाँ पर आपका x पर लेवल मंथ्स लगा हुआ है, y पर लेवल रेनफॉल इन मिलीमीटर है। ग्राफ का टाइटल ये शो कर रहा है जोन वाइज रेनफॉल एनालिसिस, एंड दिस इज द लेजेंड बॉक्स showing the color of each line along with the label. सेंट्रल जोन इस कलर से है, वेस्ट जोन रेड कलर से है, ईस्ट जोन ग्रीन कलर से है, एंड सो ऑन नॉर्थ साउथ। तो जिस कलर की जो लाइन ड्रॉ कर रहा है फॉर वेरियस जोन्स वो आपका लेजेंड में आ जाता है। अगर एक ही डाटा है तो लेजेंड शो करने की जरूरत नहीं है, एक ही लाइन है लेजेंड शो करने की जरूरत नहीं है। मल्टीपल लाइंस हैं तो लेजेंड शो करना चाहिए, मल्टीपल बार्स हैं तो लेजेंड शो करना चाहिए, जिससे आपको पता चल जाता है कि किस कलर का बार क्या डिपिक्ट कर रहा है। सो एक्स एक्सिस पर आपकी ये मंथ्स दिखाई पड़ रहे हैं, वाई एक्सिस पर ये मिलीमीटर में डाटा दिखाई पड़ रहा है, एंड दीज आर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जैसे इस लाइन का देख लें फरवरी, ये पॉइंट आपका दिख रहा है, ये पॉइंट क्या है 12 और 14 के बीच में 13 समथिंग, 13 14 मे बी, इट मे बी 13। तो इस तरह से अप्रैल में देखें ये पॉइंट दिख रहा है, ये रेड कलर का, रेड कलर मींस वेस्ट जोन। सो आपका ये 12 दिखा रहा है, 12 mm बारिश हुई है वहां पर। So like that you can understand it very easily. There should not be any problem in understanding the displayed chart. So that's all about this video. If you have liked this video, please like, share and subscribe the channel as well as video too, so that you can get other coming videos notification directly. Thank you very much. Thank you.